Our live streaming is also successful. Now I am sharing this link with other participants also.
Within more 2 minutes, we will begin our session. Professor Arjun Sarji, can we start within Yes, 2 minutes? sir. Yes, sir. We can start, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bakka sir, let some joining. Okay, It's only 43. 43. And in YouTube, there are 75 joined. Yeah. I send all the links. No, no problem. I will share one more time. Zoom count is 62 and YouTube count is 103. So I think it's time to start. Now it's 7:0. It's time to start. Welcome one and all. A very good morning. I welcome you at this national level webinar jointly organized by
Postgraduate Department of Economics, KVP Sanstha's SME Arts Commerce Science College Shirpur in collaboration with National Center for Financial Education on this emerging topic, financial awareness and consumer. Honorable Tusharji Rande, Honorable Ashatai Rande, who both present live with us. I also welcome Chairman of today's webinar, our Principal, Dr. S.N. Patel sir, and our resource person of this webinar, Professor Dr. Arjun Singh Solanki sir, Honorable Mr. Rohitji Rande, Convener of this webinar, Professor Y.D. Bediskar sir, Co-Convener, Professor S.S. Vasave sir, our Vice Principal, Professor D.B. Patil sir, Dr. M.V. Patil sir, who all live with us at this inaugural ceremony. I also welcome to all the advisory committee member, senior professor of our university and our college, as well as our UG, PG student and all participants who joined here from all corners of the country through Zoom meeting and YouTube live streaming. Before moving further, I would like to request you all to be rise for national anthem. Stand up, please, for national anthem. To be rise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, one and all. Myself, Dr. Dinesh Bakkar, Organizing Secretary, Anchor and host of this national level webinar. Let me brief you about our Kisan Vidya Prasarak Sanstha. Freedom fighter, Gandhian patriotic Karmavir Venkatrao Tanaji Randir was the founder president of our Sanstha. For the welfare of tribal and weaker students, he established this Sanstha in the year 1941. This college was started with the vision to provide higher education to them in the year 1962. As we know, this webinar is jointly organized with National Center for Financial Education, Mumbai. So we sincerely acknowledge their support and guidance. NCFE is a body promoted by RBI and SEBI and promotes financial education across the country for all sections of population. So therefore, now it's time to know more about today's webinar. So I request our principal and chairman of this event to give brief detail about the webinar. Over to you, sir. Good morning, all. Our patron, Honorable Dr. Tusharji Rande, Srimati Ashatai Rande, Mr. Rohit Rande, today's resource person, Professor Dr. Arjun Singh Solanki, webinar convener, Professor Bediskar, co-convener, Professor Vasave, our vice principals, Professor D.B. Patil, Dr. M.V. Patil, webinar organizing secretary Dr. D.D. Bakkad, and all delegates and participants. It gives me
immense pleasure to give brief details about this webinar. As we gathered here virtually at this national level webinar, jointly organized with National Center for Financial Education, financial awareness, and consumer training is the need of technological era. Because today we are using digital money, plastic cards for payment, and increasing online transaction after demonetization. Today's webinar is organized with an objective to provide financial education and what measures can be taken to safeguard our personal data in online transaction. I know you are eagerly waiting for today's resource lecture. He will give brief idea into this. Once again, I am thankful to him and NCFE for this webinar and my express my best wishes to this webinar. Thanks again all. Over to Bakkar sir. Thank you, sir, for your brief introduction and your valuable time. Now it's time for today's resource lecture. Before that, let me brief you about today's speaker, Dr. Arjun Singh Solanki, sir. He is the professor of economics with an excellent academician with more than 18 years of rich experience in graduate and postgraduate teaching and research. He is double postgraduate in economics and management. He is a gold medalist. Someone is doing. Sanjay Baisan. Please remove him. No, okay, no problem. Please don't do that. He is double postgraduate in economics and management. Again. You remove Sanjay. यामध्ये कोणीतरी ॲन्युटेशन करतोय तर स्क्रीनवर त्याचा इफेक्ट दिसत आहे. मला स्क्रीन परत बंद करून परत चालू करावी लागते, तर तसं काही कोणी करू नका प्लीज. और लेट मी स्टॉप एन्युटेशन. Okay. He is double postgraduate in economics and management. He is a gold medalist in post-graduation and first rank holder in MPhil and PhD in economics. He has successfully worked as a certified resource person for Securities and Exchange Board of India, SEBI, for many years and conducted more than 200 workshops on financial awareness. Currently, he is associated with Indian Institute of Corporate Affairs and National Center for Financial Education for the same cause. During the course of his career, he has been in various administrative positions where he developed the institutional framework, was the core of various conferences, seminars, FDPs while leading the same team. He has been judged many awards for his remarkable services. Now I request Professor Dr. Arjun Singh Solanki sir to start his deliberation. Over to you, sir. You can share your PPT and thank you, Dinesh sir. Thank you, sir. Good morning, all the dignitaries, faculty members, and dear participants. I, Arjun Singh Solanki, on behalf of NCFE, thanks to all to giving me the opportunity to present you the financial awareness and consumer training lecture to make you aware about the do's and don'ts which we are doing on day-to-day financial transactions. Students, this lecture is divided into 3 parts. Although my first part was somewhere discussed by Dinesh sir, but still I would like to share a few things about NCFE
that what is NCFE, and first part discuss the about NCFE and the importance of financial literacy for the masses. In second part, we will discuss the importance of in second part we will discuss the today's program. The topic of today's program is financial awareness and consumer training, and the last part contains the question and answer session. So my request to you is, if you are having any questions or queries in between, please note it down so that we will discuss it in last. Now moving forward, I would like to tell you that NCFE is a company created by government to impart financial literacy among the masses. Students, before going forward, I would like to tell you the surprising facts which you should know, that in terms of literacy we stands more than 70%. That means that out of 100, 70%, more than 70% of Indian population is literate, means educated. Or what I can say that as per the definition given by government, we are educated. But if we are talking about the financial literacy, this figure is only 20%. Means out of 100 people, only 20%, 20 people are knowing about the financial knowledge. And I would like to tell you one important thing, that as economy grows, as the economics student, you should know that as an economy developed day by day, it is the financial sector which has a big role to play in the economy. So considering this fact, government has realized the importance of financial literacy to the masses. That's why government has created a company calling NCFE, National Center for Financial Education. This company is created by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority, and PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority. As you all are aware, that all are the regulators who are regulating the economy in their respective sectors. Like RBI is regulating or controlling in monetary sectors, banks, etc. SEBI is regulating and the top authority of securities or share market. IRDA is dealing in insurance sector. And although the pensions has been abolished in all the sectors, but there is a new system that is called NPS, National Pension System, which is in existing, that is looked after and addressed by Pension Fund Regulatory Development Authority. So these agency has created a company calling NCFE to impart financial education not only to you people, but other society people also, including teachers, including students, including marginal individuals, so that they will take informed decisions. Students, the important thing is that the vision, and that is the mission and vision of NCFE, that to make financially aware and empowered India. Financial awareness means of information, informed individual, educated individual. When we are financially aware, means we are having financial knowledge, we our and it also reflects in our financial behavior also. So only when we are informed, then only we can take empower we will be empowered and take informed decision. Student, the purpose of this lecture is to present information which would help and empower you with right decisions related to your finances are concerned. Many financial decisions that we make to save and invest end up eroding our personal and potential wealth. Since we are living in an environment where choices rules, and whether you are doing it yourself or with the help of someone else, means mediocres, brokers, you need to be aware of various savings and investment options
available. In such situation, knowledge is our first line of defense. So the mission of NCFE is to undertake massive financial education campaign to help people manage money more effectively, to achieve financial well-being by assessing appropriate financial products and services through regulated entities with fair and transparent machinery for consumer protection and grievance redressal. Students, nowadays we all are doing financial transactions in our day-to-day life. So it is very important for us that we should know what is right and what is wrong in terms of finances are concerned, and this can be comes after when we are financially aware or literate. See, students, financially, as can be seen, the term financial education and financial literacy are not the same. These are related concepts. People achieve financial literacy through the process of financial education. The achievement of financial literacy empowers the users to make sound financial decisions, which result in financial well-being of the individual. Students, you do not need to be an expert or have financial qualifications to manage your own money, because you already have all you need, because you all are somewhere the students of economics also, or so the thing is that I hope that this lecture is a one step in this direction. uh, now Now the second part is that what is the importance, why NCFE is so much eager to spread this education to individual. I would like to discuss with you some few points before starting today's presentation. Is that the importance of financial literacy for you individuals. Dear all, we should know that earlier the lifespan of individuals is not so long. Now the lifespan is long because of medical advancements, because of so many reasons. Now an individual lives longer. Earlier individuals are living in combined families, so there are no social security problems. But now, because people live longer, secondly they live nuclear families are there, so they have to plan for their post retirement. They have to be social security requirements. That's why this lecture or the knowledge of finances is more important. Secondly, the second importance lies in the thing is that nowadays lot of products, financial products come into market. If you are aware of, you should know that nowadays it is mutual fund, and there are several types of mutual funds also, securities, shares, mutual funds, insurance. There are so many kinds of options available. Earlier there are very few options. Only people are knowing about the Kisan Vikas Patra, NSC, PPF, and fixed deposit. So when the options are large, it is good for the consumer, but parallelly it is also important that we should know what is good for us and what is not good for us, and this information is only be done when we are knowledgeable enough to take right decisions. So students, this is the second thing which increases the importance of this financial lecture. Now the third thing is higher aspirations and goals of individuals. Students, earlier the aspirations of individuals are not very high. If you ask to your father, to your grandfather, they have purchased their car or home at a very later stage of their life or their later stage of their job.
But now what has happened is in this generation we have high aspirations because of so many reasons. Loans are also very available in very cheap and easier ways. So what we do is we want to buy a house, we want to buy a car immediately after getting a job. So no problem in it that we should have a house or a car immediately. But the important thing is that we should not get trapped in the financial trap, because if we get trapped in the debt trap, then this will create problem for us, and this is only avoided by having the information or the knowledge of right thing. Now this is few things which I think you can see the importance of this lecture. Now moving forward to today's presentation, we will discuss the few things in today's these 6 points in today's lecture, and the topic of today's lecture is financial awareness and consumer training. So the first thing is identify theft protection. How we can identify theft? Theft means चोरी, कैसे हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Second thing, use your credit card responsibly. Students, loan borrowing principles, avoid impulse buying, let us go cashless, and your first paycheck. These are the few things which we will discuss in our today's presentation. And the first part of today's presentation is identity theft protection. But before discussing this part, I would like to show you a very short clip which is of very important, and you will be come to know how important this lecture is, and how the fraudsters are creative. They are robbing people by creating new and new ways of stealing. So please see, and then we will discuss. हेलो, हाँ जी, नेगी जी बोल रहे हैं ऋषिकेश से? हाँ नेगी जी बोल रहा हूँ जी, बोलिए। नेगी जी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मुझे रावत जी ने बोला था कि आपसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने शायद आपके 10,000 रुपए देने हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दूं। रावत जी 10,000 रुपए आप डालेंगे मेरे अकाउंट में, आप ये बोल रहे हैं रावत जी के? अब मैंने उनके देने हैं, रावत जी के देने थे 10,000 रुपए, और रावत जी को मैं अभी ट्रांसफर कर रहा था उन्हें, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको ना ट्रांसफर करके आपको कर दूं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ 10,000 रुपए देने हैं। अच्छा, रावत जी ने आपको बोला कि उनको ट्रांसफर ना करके आप मेरे को ट्रांसफर कर दो पैसे? अच्छा, तो मेरे को वैसे ध्यान तो नहीं है, पर आप कर दीजिए ट्रांसफर। अब ये तो पता नहीं, शायद आप भूल गए होंगे, कभी उनको तो याद है अभी तक, तो उन्होंने बोला था, तो मैं आपको दे देता हूँ अभी, है ना? गूगल पे तो यूज करते होंगे आप? भाई बिल्कुल है गूगल पे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ फ्रॉड वगैरह का चक्कर है भाई। अरे नहीं नहीं, फ्रॉड क्या है सर जी, फ्रॉड क्या है इसमें? मैं आपसे पिन कोड वगैरह थोड़ी ना मांग रहा हूँ कुछ। नहीं, बात तो तुम सही बोल रहे हो भाई। अभी तक तुमने पिन कोड और कार्ड का नंबर तो नहीं मांगा अभी तक मेरे से। चलो कोई नहीं, रावत जी का वैसे में कुछ ध्यान में है तो नहीं 10,000 रुपए, लेकिन तुम डाल दो, कोई नहीं। आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। मैं अभी आपको ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है? मैं पहले 1,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, वो जब आ जाए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं बाकी के 9,000 रुपए भी ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, अब भी कर रहा हूँ। ओके। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये करेंगे पैसे। सही में भेज दिए भाई, बस 1,000 रुपए आ गए भाई। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई जी, आगे हाँ 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए हैं। हाँ जी, आ गए? हाँ जी, तो अब मैं आपको 9,000 रुपए भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ भेज दो। लेकिन यार मेरे को सही में ध्यान में नहीं आ रहा है कि रावत जी को कौन है, रावत जी कब मैंने पैसे वो दिए। अरे मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे बोला कि आपको भेज दो, अब मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरे को टाइम, अभी मैं जल्दी में हूँ थोड़ा,
बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन चल रहा है, सामान लेने जाना है, मैं आपको 9,000 रुपये भी भेज रहा हूँ। और सुनो ये बड़ा अमाउंट है तो इसमें लिंक आएगा पहले आपको ना, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं ना लोग गूगल पे वाले, तो आपको ये लिंक आएगा, उसमें एक तो डिक्लाइन का ऑप्शन होगा, एक दूसरा ऑप्शन होगा, तो दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेना, ठीक है। बस हाँ, उसके बाद वो आपका पिन कोड मांगेगा ये वेरीफाई करने के लिए कि आपको ही भेजा है, तो आप ही के पास जा रहा है पेमेंट या नहीं जा रहा है। बड़े अमाउंट पे होता है, बाकी आप तो जानकार हो इस चीज के, ऑनलाइन पेमेंट के, आपको तो पता ही होगा ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना तो पता ही है सर हमें। डिक्लाइन कर देंगे तो पैसे कैसे आएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ हाँ, बस आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके और नंबर डाल के फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं जल्दी में हूँ तो जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। आ गया 9,000 रुपये डिक्लाइन, पे डिक्लाइन नहीं करना है, पे कोड ये हो गया वेरीफाई। अबे भाई चूना तो नहीं लग, अबे यार चूना लगा दिया यार। लालच बुरी बला है भैया। आजकल इस तरीके के फ्रॉड गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन जो पेमेंट एप्स हैं इसमें इतने बढ़ गए हैं। होता क्या है कि ये लोग आपको कॉल करते हैं किसी भी बहाने से, ये आपने कोई ऐड ओएलएक्स पे डाला होगा तो उसके बहाने से भी कॉल कर सकते हैं कि मैंने आपका ऐड देखा है, आप बेच रहे हो, मैं खरीदने का इच्छुक हूँ, से मैं खरीदना चाहता हूँ। या इस वाले जो हमने वीडियो बनाया उसमें आपने देखा कि मैंने उनका उधार देना था, उन्होंने बोला कि आपको कर दो, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जैसे किसी शॉप पे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप होम डिलीवरी करते हो तो मेरे घर पे पहुंचा दो सामान, और मैं आपको एडवांस अभी इतना दे देता हूँ, और सामान पहुंचने पे मैं आपको बाकी का पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तरीके अलग अलग हैं, इस तरीके से फाइनली होता क्या है, ये लोग आपको कुछ तो एडवांस पे कर देते हैं, आपके पास पेमेंट का मैसेज आ जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब ये बड़ी रकम आपको जब देने होते हैं गूगल पे पे, उस टाइम पे ये आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। दो चीजें हैं, पे आप किसी को पे कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी चीज अगर कोई आपको पे कर रहा है, तो कोई अगर आपको पे कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपके पास सीधा मैसेज आ जाता है कि उस बंदे ने आपको पेमेंट किया। ये चीज आपको याद रखनी है। आपको पिन कब डालना होता है, आपको पिन तब डालना होता है जब किसी दूसरे ने आपसे रिक्वेस्ट करी है उससे पेमेंट करने के लिए। लेकिन आजकल इंसान इतना बिजी है, लॉकडाउन में तो नहीं बिजी है, लेकिन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद भी जब बिजी हो जाएगा, इतना इंसान इतना बिजी रहता है कि पढ़ता ही नहीं है कि वो उसको पेमेंट हो रहा है या वो किसी और को पेमेंट कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, ठीक है। जैसे इस केस में 1,000 उसने पहले पेमेंट कर दिया, उसको लगा कि अच्छी बात है पेमेंट आ रहा है, बाकी के 9,000 रुपये को उसने क्या करा, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे पे कर। उसने क्या करा, जल्दी जल्दी में डिक्लाइन का मैंने उसको बोल दिया था कि डिक्लाइन पे क्लिक मत करना, ठीक है। तो उसने पे क्लिक किया, पढ़ा कुछ नहीं उसने कि उसके अकाउंट से कट रहे हैं, वैसे कुछ नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी में लालच में आके उसने पे क्लिक कर दिया और मुझे 9,000 रुपये उसने पे कर दिए। तो ये आजकल इस तरीके के ऐप में मतलब लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आप जागरूक रहें, ठीक है। कभी भी अननोन इंसान को अपना गूगल पे नंबर वगैरह ना दें, और अगर उसके बाद आ भी जाता है, अगर आपको कुछ वो पैसे भेज रहा है तो कोई क्लिक कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट पे वगैरह पे बटन पे तो आपको क्लिक करना ही नहीं है, तभी करना है अगर आप सच में किसी को पे कर रहे हो, ठीक है। अननोन इंसान से कोई रिक्वेस्ट आ रही है पेमेंट की, वो नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। और बाकी इस वीडियो को शेयर करो अपने। आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा। ये तो एक तरीका था कि किस तरह से देखिए गूगल पे के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं। देयर आर सर्टेन अदर काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स आल्सो व्हिच वी विल डिस्कस इन आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम,
is a growing problem in today's world. Every year, we hear new stories about people losing all their money by investing in illegal schemes, but this has not stopped others from falling prey to these schemes. This is because criminals are very creative and they keep changing their tactics to find new victims. You can keep your money safe to being aware of these risks. This is only your defense. Nothing else you can do. You cannot stop them to doing such kinds of things. But you can, if you are aware, then it's not easy to get robbed. Now we will discuss how this happens. The one thing is identity theft. This is also very common nowadays कि people क्या करते हैं आपकी हम सभी लोग social sites use करते हैं, Facebook, WhatsApp, और वहां पर वो लोग identity theft करते हैं. Identity theft का मतलब क्या है कि they steal your photograph and send requests to your friends and family. It's also a misconception. People think that since they have no money, how can they be robbed? But for fraud, you do not need money. Your near and dear ones can be robbed by representing your stealing your identity. So friends, be aware. Do not get trapped in such kinds of requests, because without knowing the genuinity of the individual, do not send them money. One thing. Now, how it occurs, how these frauds are going in day-to-day basis, we should know. We will come to know by few things mentioned here. The first thing is phishing emails, lottery, and job scams. Students, you all are using emails. I am also using emails. Whenever I open my inbox, I found certain kinds of emails offering me that I have won lottery or I have offered job from a genuine company, and those mails are also looked genuine. Once I opened those emails, they and clicked on the link provided, they take me to the other websites which are not genuine. And once we fill our personal details like our date of birth, our Aadhaar number or name, that information is very secret in nature. Once you share those information to the hackers or individuals, they may steal your money. So my advice to you is, do not get trapped. Do not send or your personal information to such kinds of emails. And because one thing is very clear, that if we haven't applied for jobs or for lottery, how could we got any offer, or how can we won a lottery? So second thing is downloading of malware onto computers or smartphones that steals information. Students, certain times nowadays what happened, that we received an email, a link offering that if we download it or send it to others, we will certainly win a t-shirt, shoes, etc. So it is very important that if we share such information, if we download that particular malware or link in our smartphones or computers, the immediately that particular link will steal information from our personal belongings. But because nowadays what people do is they store information in their mobiles and laptops. So I advise to you is, do not, if you receive such links from any unknown source, do not open it without recognizing its genuineness, because it can be a source of fraud to you. Now, the third thing is connecting to wireless networks that are insecure. Students, nowadays, Corona is going on, so it is very difficult to join to get internet. So what we do is we search a place
public place where we can get data or internet connectivity. No problem in it. We can connect our personal belongings, mobiles to internet to the open source. But the problem is if we our system is not password protected. Password protected, I mean to say that is it is strongly protected, means more than 8 to 10 digit password should be there. If the password is less than 8 to 10 digit, that is vulnerable and can be cracked by the hackers. So my advice to you is, students do not get trapped in such kinds of situation. Then the fourth thing is taking out money from an ATM that has been rigged with a skimming device. Students, we all are reading and hearing news that somebody has robbed in at ATMs, because ATMs are a place where people go for their withdrawal of money. So though fraudsters are have created certain kinds of ways to steal money from that place. So my advice to you is, if you take precautions like do not allow anyone inside to your ATMs when you are doing transaction. Second, do not insert PIN number, that is personal identification number, before anyone. When you are doing your transaction, do not first check it that nobody is watching you. If anybody is watching you, do not insert your PIN number. Third thing, before doing transaction, check any kind of chips or devices are not installed that particular place, because if anything such kind you found, do not do transaction. Because nowadays what people fraudsters do, they install certain kinds of chips and make clone of your ATMs and can do fraud to you. Now, the fifth thing is sharing of password with untrustworthy people. It is a kind of thing whenever we go out to the market or malls or restaurants, what we do certain times, we give our ATM and credit cards to the individuals and ask them to do transaction. Or certain time we share our password to that untrustworthy people. First thing is, do not share password with untrustworthy people. Even then, if any of the reasons we have shared the password with any individual, the first thing what we have to do is we have to change that password immediately after completing that particular transaction. Now, information is stolen from e-commerce and other sites you frequently visits. Students, what we do nowadays is that what people are doing is in Corona times, this kind of problem is rampant, because in Corona times we are not able to go out because of the lockdown or certain restrictions. What is happening to us is that it is very easy for us to surf online on these e-commerce sites like Amazon, Flipkart, Mintra. There are so many other sites also. So whenever you surf on these sites, you found these sites seek your personal informations, and once you share your personal informations, since these are open platforms and are very vulnerable, hackers can easily steal information from these sites. So my advice to you is, firstly, you can surf online, no problem in it. You can go online also, no problem in it. But do not share your personal genuine information on these sites, because it can be a kind of a thing which makes you vulnerable to the fraudsters. Now, moving to the second part of the session, that is, use your credit card responsibly. Students, most of us knows the difference between credit card and debit card, but still I would like to share what the difference. One is prepaid kind of thing, another is postpaid kind of thing. ATM cards is prepaid, means first we have to pay, then we are able to spend. But credit cards are first we spend, then we have to pay at a later stage. Since we have to pay in at a later time, later stage in credit cards, so the responsibility increases
more. So if we are not doing it responsibly, it will create a kind of debt trap, which cost us very costly. So what are these responsible things which we can take? That it's a kind of paradox also. If it gives us certain advantages, like if we are able to return money on time, it certainly increases our credit score. Credit score means if we are returning money on time. Credit score is a kind of thing which is managed by certain agencies. Whenever we visit a bank for any kind of loan, that time this credit scores are very important for us. But that particular bank checks your credit score. If your credit score is good enough, then certain banks are eager to lend money to you. If this credit score is not good, they certainly will not lend you money at a cheaper terms. So it is good for you that if you are using credit card, return money on time. Second thing, if you are using credit card, you also can earn reward points that can be used for further purchasing. Now third thing, manage your short term borrowings also. Students, credit card is very important because it provides a window when nobody else is there to help us. This is a short term borrowing window where we can borrow money in at any time. So it is very important, but the thing is, use it responsibly. Then for last advantage, not the least, that this provides us the opportunity that we do not need to carry cash here and there. That is also a kind of benefit which is offered by plastic money. Now, the third thing is education loan. It is very important for students, and government has taken this initiative that no individual in this country should be left uneducated in the lack of funds. So government, because banks are not keen to lend money to students because of the risk associated with these education loans. So what government of India has done is, government of India has uh, developed a portal that you can note down also, Vidya Lakshmi portal, where where you can where you can access your money. You can take your education loan by taking by going to these. Now you should be aware of what are the precautions you can take while doing taking education loan. That you should do cost benefit analysis. The cost benefit analysis means that everything has some cost and benefits also. The first cost is interest payments on loans. Hello. हाँ जी, अभी से थोड़ी देर में आऊंगा लेक्चर में, ठीक? Interest payment on loan. Banks may have prepayment penalty charges, potential fluctuations in future interest rates. Uh, Students, whenever we go for loan, these are the things which we should take into account. If we do not take into account, banks will certainly take our money. So that's why we have to clarify all these details before going for education loans. So now do your own cost benefit analysis. Potential, what are the potential benefits? That we interest payments are tax free under 80E. If we take education loan, then in that case we will certainly take advantage in our taxes, potential earning from investment, potential fluctuation in future interest rate. So these are the kind of benefits which is offered by banks. Now the important part is that how we can avoid impulse buying. It is important that impulse buying means doing purchasing without planning, without in hurry, doing purchasing in a hurry. So how can we avoid this thing is when we are knowing that the difference between need and want.
if we are able to differentiate between need and want, what is need and what is want, then we certainly in a position to avoid this impulse buying. How we can avoid this impulse buying? First is need. Need means roti, kapda or makan. This is our need. Want means want all kinds of luxuries. Luxury we want. We want car. We want luxury car. We want luxury house also. So if we are able to differentiate between need and want, we certainly in a condition to avoid impulse buying. But what are the reasons which leads to impulse buying? We will discuss one by one. Why we buy impulsively? Because shopping is fun. Certain times it happens that whenever we go for shopping with our friends and family, uh, for their sake, for their shopping, but we do shopping with them without needing it. That is all. That gives us an kind of empowerment and pleasure. So it creates a kind of thing which can be prevented because it leads to impulse buying. Now, the third thing is that why we buy impulsively is because to avoid loss aversion. We want to avoid losses also. These kind, whenever certain times we visit malls and big markets where we found such kinds of posters placed to attract customers, which leads to impulse buying or unnecessary spending, because these are kind of marketing gimmicks, marketing strategies adopted by companies to attract more and more customers. So we can use these all to now the third thing is that why we buy impulsively, because we desire to save. It is very difficult to resist the idea that we will save if we buy now. Students, this is also a kind of thing which is very prominent. What is that at certain stores, branded stores, they offer us a 75% of discount. That is again a kind of thing that prevents us from, that gives us an opportunity to buy more and more, and it leads to unnecessary spending. So students, this is a kind of thing that we should take into account before buying anything that leads to unnecessary expenditure, that if we are able to differentiate between need and want. Now, the fourth thing that I think is important, and normally we get trapped, is that we think that we believe we are better than average in looks, in driving and parenting. That is also one of the important reasons which leads to impulse buying, because we think that that particular thing, if we wear or we possess, certainly gives us a smart look. So these are the things which are responsible for impulse buying. Now, how can we avoid this impulse buying? We are trying to answer this question, this through these four questions, which you can ask to you whenever in future you will visit to a place where when you think of buying anything, ask to you yourself these four questions. If you ask these four questions and answer them in this manner, you certainly can avoid impulse buying. So this is that the first question is, if your need is urgent and is also important, you can buy it, like a house. Sorry, if you are needing a house, it is urgent also, it is important also, certainly you need to buy it if you can afford it. But in second thing, if a thing is not urgent, not important, like buying a car. Buying a car, buying a car is important but not urgent. So you can plan it by doing small savings for a later date. You can plan it and you can purchase it. Now, third thing, if your requirement is need is not urgent, neither it is not important, do not buy it. If your buying is not urgent, not important, you certainly not need to buy it. Then the fourth part is, if your need is urgent but not important,
Buy if you can afford it. Certainly, if you are having money, you can buy it. No problem in it to buy it. So by adopting such kinds of things, you certainly can avoid impulse buying behavior. Now, students, this is very important for us, that government is emphasizing more and more to go cashless by doing digitalization. Government has ensured that this will be introduced in every aspect of our financial life, because going cashless gives us transparency, economize our spending, and also removes black economy from the market. So how can we go cashless? That is the subject matter of this presentation, of this slide, subject matter of this slide also. Now we can go by internet banking, mobile banking, debit and credit cards, mobile wallets, Aadhaar enabled payment systems, unified payment interface, unstructured supplementary service data, Bharat interface for money also. Uh, Students, we will discuss each one by one. इंटरनेट बैंकिंग, देखिए इंटरनेट बैंकिंग यू डू नॉट नीड एनी सेपरेट अकाउंट फॉर taking this facility. You simply, for using this facility, you simply required a bank account in any bank. In complement, you will receive a password and internet ID, and all those transactions which you earlier you are doing by going to a bank, you can do it in your home, through your mobile, through your laptop, through your desktop also. If you are aware of, earlier it is very painstaking to do banking transaction, to go bank by standing in queues for depositing or withdrawing money. Now you can do all those transactions by just staying home or in office also. So these are few things which you can take: National Electronic Fund Transfer, RTGS, real-time gross settlement, ECS, Electronic Clearing System, IMPS, Immediate Payment Services. These are the few things where you can transfer your money in no time from to the beneficiary account. Beneficiary मतलब जिसके भी अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपको सिर्फ उसका अकाउंट नंबर चाहिए, आपको सिर्फ पासवर्ड चाहिए, आपको उसका IFSC कोड चाहिए, आप उसके अकाउंट में पैसे नेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। आप बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आज गवर्नमेंट बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। नाउ मोबाइल बैंकिंग, देखिए मोबाइल बैंकिंग इज अ सर्विस provided by a bank or other financial institution that allows its customers to conduct different types of financial transactions remotely using a mobile device such as a mobile phone or tablet. देखिए मोबाइल का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर बैंक की ऐप अपने मोबाइल फोन में अगर डाउनलोड कर देते हैं तो आप उसके थ्रू सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, देखिए विजिट, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आपको उसको विजिट करना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। आपको केवल KYC, नो योर कस्टमर, आपको पूरा करना है, जिसमें आप इसके पूरा करने से आपको एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू हो जाता है, जिसे आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर के द्वारा उसे एक्टिव कर सकते हैं। आपको उस वहाँ एक ATM विजिट करना है और एक्टिवेट कराना है, उसका आप ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन आप कहीं भी किसी भी शॉप पे पेमेंट में यूज कर सकते हैं। नाउ मोबाइल वॉलेट्स, देखिए मोबाइल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग। आप लोगों ने सुना होगा पेटीएम का नाम, ऐसे ही पेटीएम की तरह बहुत सारे और भी हैं, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ऑक्सीजन, एयरटेल मनी, दीज आर ऑल अ काइंड ऑफ मोबाइल। देखिए मोबाइल वॉलेट इज अ मिक्स ऑफ मोबाइल प्लस वॉलेट। वॉलेट मतलब हमारा जो पर्स पहले होता था उसका प्लेस अब मोबाइल ने ले लिया है,
आपको इसमें से आपको आपको उसमें मनी जैसे उसमें रखते थे, हम इसमें भी मनी रख सकते हैं। आपको इसके लिए केवल एक बैंक अकाउंट और स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि इंटरनेट चलता हो। आपको उस पर्टिकुलर मोबाइल वॉलेट की ऐप डाउनलोड करनी है। लोडिंग मनी यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड। आपको अगर आपने केवाईसी उसका नहीं कराया है तो आप 20,000 तक कर सकते हैं, अदरवाइज 1 लाख तक उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप इसका यूज पेमेंट्स करने में, रिसीव करने में भी कर सकते हैं। और इसका सबसे एडवांटेज जो फायदा है वो ये है कि इसका मल्टीपल यूटिलिटी है। आप और जितने भी आपके बैंक हैं वो सारे आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है उसमें आप इश्यू कर सकते हैं। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट आधार पे, देखिए इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट अर्लियर व्हेन डिमोनेटाइजेशन वाज डन, so in that time we have not enough money to buy our day to day shopping. So government has created a facility calling Aadhaar Pay. Means you can do your transaction by simply using your Aadhaar card. That is called Aadhaar enabled payment interface. And you can do that particular transaction by going up a POS, point of sale machine, by माइक्रो एटीएम्स ऑल्सो। इसमें आपको केवल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो आधार नंबर है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। आप विदाउट पिन और पासवर्ड के द्वारा भी इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप इसमें फंड ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी के लिए कर सकते हैं, कैश को डिपॉजिट करने में कर सकते हैं, शॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी नहीं है। यानी आप आधार, आपका जो आधार कार्ड है आप उसका इस्तेमाल एज ए एटीएम भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी थी दोज हु आर लिविंग रिमोटली एंड आर नॉट इजीली गेटिंग एक्सेस टू दी ATMs. So by considering that thing, government has provided this facility. Now यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, देखिए यूपीआई भीम ऐप है जो गवर्नमेंट की यूपीआई है। हम सभी लोग उसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें आपको यूपीआई में आपको यूपीआई ऐप डाउनलोड करनी है। ये एक थर्ड पार्टी ऐप होती है। आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए, जो वीपीए क्या होता है, आपको मोबाइल नंबर या आपको अकाउंट नंबर नहीं देना है आप सेपरेटली, आपको केवल आधार नंबर या मोबाइल नंबर देना है और आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है और आपको जो है फर्स्ट टाइम आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। देन आपको मोबाइल पिन सेट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसके द्वारा अपने पैसे ट्रांसफर या पैसे रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो गवर्नमेंट ने ये ध्यान में रखते हुए दी है कि जो लोग जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग भी इस व्यवस्था से वंचित ना रहे। इसीलिए उन्होंने बिना इंटरनेट फोन पर, बिना स्मार्ट वाले फोन पर भी *99# अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा वाली फैसिलिटी दी है, जिसमें आप उसमें क्लिक करके वही सारे काम जो स्मार्टफोन पे करते हैं वही आप क्यूटी फोन पे भी कर सकते हैं और वो आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको भीम ऐप के बताया था, भीम ऐप को डाउनलोड करने का सीधा सा तरीका है, आप कैशलेस जा सकते हैं। आपको भीम ऐप डाउनलोड करनी है और आपको सिंपल सिक्योर फास्ट ट्रांसफर है पैसे भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, किसी का बैंक HDFC में हो सकता है, किसी का SBI में हो सकता है। अगर सब में है तो सबको भी कर सकते हैं, किसी एक में है तो एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि आपको सेंड रिसीव टू मोबाइल एंड वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो आपका जो ये है मोबाइल नंबर और आधार नंबर, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं होती, तो उसके द्वारा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। आप QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। नाउ हम अपने आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में, सेकंड लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, लास्ट स्लाइड में पहुंच गए हैं। दैट इज आवर फर्स्ट पे चेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स।
रिक्वेस्ट पे चेक। देखिए पे चेक का मतलब ये है कि आपके जितने भी आप जब आज के बाद जब जॉब करेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम जॉब करते हैं फर्स्ट टाइम हमें सैलरी मिलने वाली होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें उसे खर्च कैसे करना है या इन्वेस्ट कैसे करना है। तो ये बहुत सी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि उसे हम कैसे खर्च करें, हम उससे क्या करें, हम उससे छुट्टियां मनाएं, हम उससे लोन वापस करें, हम उससे कार खरीदें, हम छुट्टियों पे जाएं, शादी करें या रिटायरमेंट के लिए बचाएं। तो ये कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो हमारे लाइफ गोल्स आप जो हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हमें फर्स्ट सैलरी मिलने वाली होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो बताऊंगा जो आप जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलने वाली होगी तो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सब यू सर्टेनली विल बी बेनिफिटेड। देखिए मैं आपको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने जॉब शुरू की और मुझे ये नहीं पता था कि इसे खर्च कैसे करना है, या खर्च करना तो पता था, ये नहीं पता था जमा कहाँ पे करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम वल्नरेबल हो जाते हैं और अपने पैसे खर्च कर देते हैं, प्रॉपर सेविंग नहीं करते। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है जब हम हमारी जॉब लगती है तो हमें सबसे पहला जो काम है वो हमें एक इमरजेंसी सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। हमें अपना इमरजेंसी सेविंग अकाउंट ओपन एंड इमरजेंसी सेविंग बैंक अकाउंट। Emergencies are unpredictable, should cover at least 3 to 6 months of your expenses. Set aside a small amount every month. Only use in case of an emergency. Start rebuilding the fund immediately if used. देखिए, now you all are aware that corona is going on and most of the individuals have lost their job. Certain individuals have lost their lives also. So one thing is sure that we cannot prevent emergencies. We cannot predict emergencies. We just uh, reduce their impact. So how can we reduce these impact of these kind of corona thing or these kind of emergencies? By building a small savings, by creating an emergency saving account. And in this account we should have 3 to 6 months of एक्सपेंसेस कवर्ड। हमें इसमें कितने पैसे जमा करने हैं? जितने हमारे हम एक मंथ में खर्च करते हैं उतने 6 मंथ के लिए। यानी अगर हम 10,000 रुपए एक महीने में खर्च करते हैं तो 60,000 रुपए का एक हमें सेविंग अकाउंट हमें बनाना है और उसमें वो 60,000 रुपए बना के रखने हैं। अगर किसी टाइम में हम उसे खर्च कर लेते हैं तो दोबारा उसे हमें बनाना शुरू कर देना चाहिए। और ये इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी में ही है कि हमें ये अकाउंट में से पैसे तभी निकालने हैं जब हमारी जो इमरजेंसी हो, अदरवाइज हमें इस अकाउंट का यूज नहीं करना है। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एवेन्यू है जहां पर हम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपल्सरी सेविंग ईपीएफ enables you to enjoy your retirement 12% of your salary and a matching contribution। देखिए आप जानते हैं जब हमें जॉब करते हैं तो सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो लोग 15,000 से कम पाते हैं सैलरी उनके लिए तो कंपलसरी है, और जो लोग 15,000 से ज्यादा पाते हैं उनके लिए वॉलंटरी है कि वो अपनी सैलरी का 12% जो है उनका इस ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। सरकार के पास एक अकाउंट खुलता है जिसमें कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है इक्वली और एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का लिए आता है और 12% ही एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात इस बात की इसकी इस अकाउंट की होती है कि इसमें आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की, सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है। आप सभी लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो समझते होंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला भी जानते होंगे, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है, समझना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, कंपाउंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे भी मिलता है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट कंपाउंड के साथ किया जाता है उसमें जो कॉर्पस होता है, जो हमारा सेविंग होता है, जो हमारा फंड होता है, वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई या ग्रो होता है, जबकि सिंपल इन्वेस्टमेंट में उतना ग्रो नहीं होता।
देखिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो ईपीएफ की फैसिलिटी होती है, जो लोग जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए पीपीएफ की फैसिलिटी होती है। इसमें आपको 500 रुपए कम से कम जमा करने होते हैं, मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं एक साल में, 12 बार आप इसमें जमा कर सकते हैं। और लॉक इन आपका 3 साल होता है, 3 साल के बाद चौथे साल में आप लोन ले सकते हैं और 7 साल के बाद आप निकाल भी सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं। और तो पहला चीज मैं आपको यही कहूंगा, जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं कि एक इमरजेंसी सेविंग अकाउंट खोलें और एक ईपीएफ अकाउंट खोलें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हम इंश्योरेंस सभी हम लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर इंडिविजुअल के साथ दो एस्पेक्ट जुड़े होते हैं, एक फाइनेंशियल, एक इमोशनल, यानी हम किसी के बेटे भी हैं, भाई भी हैं, और दूसरा हम इनकम भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी फैमिली में। अब लाइफ की लॉस होने पर जो इमोशनल कवर अप है वो तो हम किसी को, भाई बहन बेटा तो कोई किसी को लौटा नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल लॉस जो वो इंडिविजुअल इनकम अपनी फैमिली को दे रहा था, वो इंश्योरेंस कंपनी उनको कवर करती है, देती है। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल जो आपके रिस्क को कम कर देता है, कवर करता है। मॉनेटरी टर्म्स, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंश्योरेंस आपको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लेना चाहिए। वी डू नॉट बाय इंश्योरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। और दूसरी बात, योर एज इज मेजर फैक्टर इन कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। अगर आप अर्ली एज पे लेते हैं तो आपको बहुत कम इंश्योरेंस पेमेंट करना होता है, अगर आप लेटर स्टेज पे लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो माय एडवाइस टू यू इज whenever you are going to get money, going to receive your first paycheck, the thing you can do is buying an insurance, life insurance as well as health insurance. Life insurance is for your life, for your family. Health insurance in case of health emergencies. So buying this insurance has tax benefit also. इसके अंदर टैक्स में भी आपको एडवांटेज होता है, आपकी प्रीमियम बराबर इनकम जो है आपकी लेस हो जाती है टोटल इनकम में से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, जो स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट की गई है, देखिए सब जगह से पेंशन लगभग खत्म हो गई है एक्सेप्ट आर्मी, आर्म फोर्सेस और मैं के अलावा। तो इनमें पेंशन नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए वैसे भी कोई पेंशन नहीं है। तो हम अपना पोस्ट रिटायरमेंट जो है प्लान कर सकते हैं बाय डूइंग अ पॉलिसी, बाय ज्वाइनिंग एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जिसपे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। देखिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड इज मैनेज्ड बाय दी, ये एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, यानी आपको थोड़े थोड़े पैसे हर महीने देने हैं, एक साथ नहीं देने हैं आपको। हर महीने आप चाहें 500, 1000, 2000 जो भी आप चाहें वो उतने बना सकते हैं। उसके उसके हिसाब से हर महीने आपको उतने पैसे अपनी सैलरी में से उसमें जमा करने हैं, जो पैसे आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड इज मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस फंड को मैनेज करते हैं। और वो फंड मैनेजर्स इस पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर की रिटर्न बहुत अच्छे आने की संभावना होती है। 65% एलोकेशन इक्विटी में करते हैं। इक्विटी देखिए, इक्विटी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत हायर रिस्की होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है। इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में एडवांटेज होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है, 500 कम से कम है और 3 साल का लॉक इन होता है इसमें। Whether you will reach your life goals will determine by how much you earn, how you spend, how you save, where you invest. These all 4 factors will determine your success in life, your financial secure future in life. So thank you, student. This is all from my side, which I have to share with you. Now over to Thank you, sir.
If you have any questions or queries, please feel free to ask. Thank you, sir, for your resource address. The participants were highly benefited by this. Sir, this is completely remarkable address on this needful topic, financial awareness. Our Zoom and YouTube chat box is full of appreciation, like excellent session, wonderful session and all. So this is completely successful with 100 participants at Zoom and more than 300 participants at YouTube. So thank you, sir, on behalf of our college. Now, participant need time to take question answers from your side. You can raise your hand in Zoom meeting, and YouTube live participant can ask their question through chat box, live chat box. So I will unmute one by one, and then they can ask their question. You can raise your hand. And YouTube. Sir, एक second. Yes, yes, sir. Suresh G has asked a question that please share about some scheme for school students by NCFE. Sir, you have asked a very valid and important question. We have a program for school teachers also, where 4 to 10 class standard teacher has has a different module for their teachers, where we provide training to those teachers which are certified by NCFE as money smart teachers, so that those teachers will inculcate and educate their students in that particular age group, because in childhood only we are able to inculcate these kinds of habits. So sir, if you can approach through Dinesh sir. Dinesh sir has my number also. He can share with you my number. I will, if you need more guidance, I will share you certainly. Secondly, you can visit our site NCFE, National Center for Financial Education. Just Google our site NCFE, and you will have all the required information from that site. Sir, ji sir. Thank you, sir. Thank you. Participant, you can raise your hand. There is a question in YouTube chat box. Let me read the question. Netra Kumari has asked a question: is there any new retirement scheme? Ma'am, I would like to share you a very important scheme. There is a very few people are knowing a kind of scheme provided by the banks that is called reverse mortgage. In reverse mortgage scheme, what we do in times of home loans, it is just reverse of that home loan. In home loan, what we do? First we take loan and then build our house. In reverse mortgage, first we mortgage our house, and they will provide you 40% immediately, and 60% they will provide you in terms of annuities up to a person who lives their life. After that also, if your nominee wants to take back that particular house, he can take that house by paying the money owed by that particular bank. But this thing, people feel social shame to mortgaging their house. So it is important for those individuals whom nobody is looking after, so they can take advantage of this thing. For retirement, we can take advantage of NPS policy also, National Pension Saving Plan, systematic investment plan also. You can take advantage of these policies. Thank you. Thank you, sir. So I think we are running 20 minutes ahead of our session. So this is our last question. One Nanju Nathan from HM has raised their hand. I will try to unmute them. Okay. Again. I think it is enough, sir. We can have some surprise for you. Thank you for your valuable time during this session. Our organizing team
has decided to felicitate our resource person through virtual recognition for sharing their valuable time and knowledge. As we gathered here virtually, we cannot offer you memento, bouquet, etc. So this is our small token of appreciation, token of love. I request you, Professor, let me share the screen first. Let me. Sir, can you see our certificate of recognition? Sir, Yes, sir. can you see our certificate of recognition? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, so this is our small token of love. I request Professor Arjun Singh Solanki sir to kindly accept the same. Over to Professor Arjun Singh Solanki sir. Kindly accept the same. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We will shortly email the same to you. Now I request our Vice Principal, Professor M.V. Patil sir, to express vote of thanks. Over to you, M.V. Patil sir. I am audible. Yes, sir. You are audible, sir. Hello, everyone. First, okay. Hello, everyone. Firstly, I sincerely thank to Principal Dr. S.N. Patel sir for accepting chairmanship of the webinar and given valuable time and valuable thought to our webinar program. I also thankful to our patron, Honorable Tusharji Rande and Honorable Ashatai Rande for the permission of the same valuable time during the webinar. I am also thankful to Honorable Rohit Baba Rande for his valuable time and guidance during the webinar. I am also thankful to today's research person, Dr. Arjun Singh Solanki, sir, for the accepting our invitation and sharing their knowledge and expertise. I am also thankful Professor Y.D. Bidiskar, Professor S.S. Vasave, Vice Principal D.V. Patil sir, Dr. D.D. Bakkad sir for well coordination and professionally handle all things related to the webinar. Last but not least, I am thankful to all participants for their huge support. Thank you, Dr. M.V. Patil sir. Thank you, Professor Arjun Singh Solanki sir. Participant, it's over from our side. Now our meeting has closed. If you have any query, you can email me, you can chat me on my chat box. You can share your questions on our Telegram group. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.